Okay, fine. So this is our May June 2021, as you can see. Okay, we're in 22. We are not doing the first part. Okay, we haven't done Word. I will never give you a module that we have never discussed before. Obviously not. Okay, so because there were like one or two students who solved MS Word and sent it to me. I never taught you that. मैं क्यों वापस काम दूंगा sir? Task 3. So first of all, obviously you're supposed to import this file. So please listen carefully. You will always get is a zipped files. So whenever you have a zip file such as this one, okay, you have to right click and you have to extract. If you don't have WinRAR, you can click over here and there's this extract all option over here. Extract all if you don't have it. Click on extract all, it will extract in a particular folder. इसमें मुश्किल काम नहीं है. So you should know how to extract files. You cannot directly open this, okay, open this and then copy the path and think that it will know. It will not import the files, obviously. So मेरे ख्याल से I have repeated this like so many times with first extract. Once you have this yellow folder, once your files are in extracted form, uncompressed form, copy the path and then you can start importing. Okay, I don't think so it's such a complicated thing that you keep on forgetting. Now open up access and we will import the table. Okay, yeah, I know some of you were able to do the paper, but uh, that doesn't count actually as the entire class. तो उसका फायदा नहीं है. So external में आके from file, text file, anyone has a problem, stop me. Okay, browse, and as per the question says, I have a lot of tab opened up, but I can't close them. We have to open up is this one. Hold on. So here we go. Since many of you did this part, you have an idea, yes or no? Advanced may I? Now read the question. So over here, what we have to do is text integer. This all will be date with time. We can set this format afterwards. Okay, इसके बाद हमारा आ गया position is number ठीक हो गया, text बाकी सारा ठीक है, and it's DMY, check it's DMY. Okay, next किया, I have to make what a primary key, race number as a primary key. I hope no problem, yes or no. If I open this up, you can see is I am getting the time in 00, so it is coming fine, yes or no. It is in hour, minute, second. If it was not, I would have changed it. तो मैं change करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? How do we change it? Okay, we can come over here in the design view और मैंने जिसका change करना है, for example total time का, इसमें आके आप इसके format में लिख दोगे HH colon mm colon ss, yes or no. Hour, minute, second separated through the colon. ठीक है, format में आके in case, yes or no. हो रहा है fine, नहीं हो रहा तो मैंने बता दिया, ठीक हो गया. I have no problem. Next, import the file these categories. So obviously we have to now import another one. So external, and frankly speaking, it's not difficult. I don't know why did you get confused the other day. I want to discuss more things, so please keep, let's speed it up. क्योंकि मैंने पूरा solve करना है. Categories का, here we go. थोड़ा speed तेज कर लेता हूँ. And then first row contains field name. कोई data बताई हुई या नहीं बताई हुई. Cat code is actually the primary key. हम इधर आए, हमने cat code को primary key. If there is any error, you can't continue. You have to delete the table and the errors. Import again, rectify the error, फिर continue. Error के साथ you cannot continue. Okay. Then we have is outcomes. So you have to import is outcomes. So which will have the once we have this, they say evidence of the primary key and field name. So what you have to do is a screenshot of this. Okay, a screenshot of this and a screenshot of this. I will not require you to do this in the Friday assessment. We will do this in the half yearly in December. ठीक है, अभी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर लग जाता है, ज़ाया होता है, so ज़रूरत नहीं है. But obviously you should know how to do it, और मैंने बता दिया आपको, ठीक है? Okay. Once we've done this, we have to make a relationship, and relationship के लिए आपको पता ही है, we need to come database tools, relationship, and we need to add all the
three tables. So once you add three tables, make sure you maximize it. You can see everything. So you can see is cat code and cat code. So cat code over here is a primary key and cat code over here is a foreign key which makes one-to-many relationship. Take a screenshot, place in the evidence. One, uske baad, it has to be start code and start code. So start code here and start code here. Take a screenshot and place it in the evidence document. इसमें पेपर तो ऐसे होगा मगर आपने एविडेंस नहीं बनाना, मुझसे रिपोर्ट चाहिए अभी, मगर आपने ऑब्वियसली हाफ ईयरली में आपने सारा करना है ग्रेजुअली, ओके। मंथली में बहुत बहुत ट्रबलसम हो जाता है ना प्रिंट आउट्स हैंडल करना, सो आई डोंट वांट टू डू दैट, सो यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल, ओके, बिकॉज़ हाँ हमने सिर्फ रिपोर्ट प्रिंट करनी है, आई विल जस्ट शो यू राइट नाउ, बट ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस स्टेप, नहीं करना तो पड़ेगा ही आपको, यू कांट डायरेक्टली गो टू द रिपोर्ट। तो हमारा पॉइंट 20 हो गया, एनी प्रॉब्लम एनीवन, फाइन till now? Yes, I'm good, 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 good. So enter the following details as a new record. So what you have to do is you just have to come down to the this table, and you know how to enter the records, yes or no? आपने bottom पे आना है, and over here at the very bottom you will enter the record, yes or no? I'm not doing this right now because of time constraint. Probably you will do it. No, not probably, you'll definitely do it. I will make both reports, not only that one. I did not give you this one. I can't give you just in one hour to do both. So using fields from all tables, so all of you can see. Okay. Now, even that day, I had few students, very few, who still had a problem which step to do first. इसका मतलब आपने बिल्कुल practice नहीं की. Okay. ऐसे कैसे हो सकता है कि you don't even know? Obviously, you do know the first step you have to do is this one. So first of all, when we have to make, so what are we supposed to make? We are supposed to make is a report, yes or no? In order to make a report, we have to make a query first. Query बनाओगे तो आपकी report बनेगी. Get my point? Query will have all your filters, your criterias. तो सबसे पहले, let's make a query. So come into the query design. Let's add all the three tables. ठीक है? In case if I add another table mistakenly, you can just right click and you can say over here is remove the table. तो हाइड कर दो आप, एक ही बात है, हाइड एंड रिमूव सेम थिंग। इधर आ जाओ आप, इसको इंक्रीज, ओके फाइन। नाउ हाँ बेटा वो अगली रिपोर्ट थी, आई एम सॉल्विंग बोथ ऑफ देम, आई डिडंट गिव यू दिस वन ना, मगर लेट मी सॉल्व पूरा। ओके, race number first name, so we have over here is race number, first name, last name, nationality, race category, I don't see the race category, race category, status. See, they're using data from every table. Do you see that? That's the point and advantage of relationship. At the back, beta, are you listening? At the very back, you're listening, right? Okay. Okay. And ranked. ठीक हो गया? पहली चीज ये करो, विदाउट एनी क्राइटेरिया इसको रन करके देखा करो। डेटा आ रहा है, गुड। अगर डेटा नहीं आ रहा, ओके, यू डिड समथिंग रॉन्ग इन जाके रेक्टिफाई, मुझे नहीं बुलाना, आपका डेटा नहीं आ रहा, आपने हैंडल करना। आई कम टू यू एवरी टाइम एंड आई हेल्प यू आउट, सीआई में आप लोग क्या करोगे? गेट माय पॉइंट? So I'm sorry I have to behave that way all the time. Okay, let me enjoy my cup of tea. Okay, so here we go. Come here. Now what we do is we've done with this step. Yes or no? After doing this step, we directly have to come to this step. It's always the case. क्या करना है? Race category is Elite Pro. So आपने अपने common sense use करो. इसको run करो. Do you see over here is I have Elite Pro as one word? Yes. तो मुझे स्टार एलीट प्रो स्टार लिखने की जरूरत नहीं है, यस और नो? व्हाई डू आई नीड टू राइट स्टार एलीट प्रो स्टार? किस केस में? कंटेन्स, अगर लिखा हो प्रोफेशनल एलीट प्रो या एलीट प्रो बेसिक, समथिंग लाइक इट्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और उस सेंटेंस में एलीट प्रो आ रहा है, आप लिंग्विस्टिकली बात को समझो तो व्हाई आर यू जस्ट डूइंग इट एज अ रोबोट? तो वही कह रहे हैं कि you just have to find lead pro. So इस केस में all I have to do is I will type, किसमें था ये? This was your race category. So race category में if I directly type elite pro, like
वो खुद कर देगा, आपने उसको छेड़ना नहीं, and I get lead flow. So, for example, if the question was the status should have finish, contain, finish, exactly, फिर start finish start बात बनती है. समझो तो बात को at least. Just keep on putting stars every time is not the right way. Concept भी कुछ चीज होती है. हाँ, star से काम कर जाएगा, but your concept is not clear. Okay, anyway. So, I mean, relationship girl बना रहे हो, they're doing something wrong. Okay, okay. The start code does not include pin. The stat code, sorry. The stat code does not include. So I did not add the stat code, yes or no? So and आप देखो यहाँ stat code add नहीं करना है. Have you noticed that? Uh, Very good, very good. तो हम क्या लिखेंगे? अनहाइड कर देंगे. Not मगर बेटा एक काम करना, पहले रन करके देख लेना before you untick कि पिन आ तो नहीं रहा, पिन नहीं आ रहा, yes or no? So since it's working, now I can untick. इससे होगा show नहीं होगा, but the criteria is being applied to it. Yes or no? Okay, ठीक है. अब हम आ जाते हैं कि in this okay, so shows only the fields हो गया. In this order, data and labels हो गया. Descending order of status. So status descending. Yes. What else? Has yeah. मैंने फिन लिखा है. Oh sorry. मगर पिन भी थे. पिन. ठीक हो गया. So right. So what we have over here is this, ठीक है. अब ये हमने रिपोर्ट बनानी है. So what do we do? Oh, Control C. That's the name of the report. आप इसको run करो. This is the output in the form of table. You can directly create a report of this. How come to create? Click on report. Save it with the same name. Report आ गई. इसके बाद क्या करना है? Single page पे इसको कैसे? Single page. एक page पे है. जी, orientation. Well done. Portrait. Very good. Very good. Okay. So slow and steady. बहुत जल्दी जल्दी ना करो. Make sure ऐसा हो कि डबल लाइन में ना आए. ठीक है. Yeah, one page wide means that it could be one page wide but multiple pages tall. Single page means only single page. मुझे लगता है मैंने नहीं किया. यार, bad. That will take more time. If you want, I will discuss in IS2 with you. मगर जरूरत नहीं है. It's more time consuming. It's for customizing report if you get much more complex report creation, which is not in the syllabus. It's in A level IT. Okay. So अच्छा ये आप देख रहे हो, it's all coming in one line. In case if I somehow squeeze it much, you see it's coming in double line. This is wrong. यूं नहीं होना चाहिए. So आपने काम करना है. So you have to make sure I don't squeeze it much कि वो double line में है. It has to be in single line. अगर single line में होगा और इसको मैं preview करूंगा in print preview. So you see I have one here. ठीक है, एक one page पे आ रहा है मगर ये page waste हो रहा है. Listen carefully. How to rectify this? Very good. Design view में आके आप चाहे तो इसको delete कर दो, चाहे तो you can make it here. Now इसको back पे ले जाओ. इससे क्या होगा? If I now preview, print preview, वो blank page खत्म हो जाएगा. ठीक है, वो थोड़ा सा इसको मैं कर सकता हूँ. मैं बल्कि मैं कर देता हूँ. बिल्कुल नहीं आना चाहिए. So let's go back. हम्म पहले व्यू नहीं था ना. अच्छा, so क्यों नहीं आ रहा अभी? हम्म डे टाइम की जरूरत है नहीं. इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट. इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट. तो हमें करने की जरूरत, ये एक्स्ट्रा देखो चीजें थी. आई जस्ट डिलीटेड देम. So fine. Now this will be perfect. So if I look at the print preview, you see there is no. It's absolutely in a single page. Can you see that? Yes or no? We done with this? Can we come to the second report?
Okay. Meanwhile, you can take the attendance. Let me start creating the second one. So first one done. Okay, you had to add your name, centrum, candidate number. Where do we add this? Very important point, huh? Very good. Why page footer? Can someone tell me? Exactly. See, I have really good students. So ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ये यूज नहीं करते. दिस इज फॉर द फॉर्मूला. मैं जरा एलैबोरेट कर दूं. दिस इज योर लेबल. आप लेबल को यहाँ लगाओ और इसके अंदर यू कैन ऐड योर नेम. अच्छा, इफ यू वांट, या यू कैन डू इट बोर्ड. बिल्कुल डू टू इट. वेरी गुड वे ऑफ प्रेजेंटिंग. वो पूछ, आप पूछ लें, पूछ लें. Thank you. Okay. If you want to find is, let's say, the the sum of anything, of a number, the average of a number, you want to count the records, yes. बट दो फील्ड्स के एवरेज निकालने को नहीं कहेंगे आप. हम्म. मैंने मेरे ख्याल से, नो इशू, नो इशू. आप मैं बता दूं. अगर ना हो वापस से जरा आओ, और जिसको भी करना है असेंडिंग, जिसको भी करना है कर लो बात. वेयर वट एवर, एंड देन ब्रिंग इट. इफ इट डजंट वर्क ओवर देयर, व्हाट क्वेश्चन आई पूछा, आई टेल यू समथिंग. आई एम ग्लैड यू आर विजिलेंट. Between this, between 1 and 10, right to between, yeah, greater than equal to 1 and less than equal to 10. Yes or no? Do you know how do we write that? So मैं ये कह रहा हूँ less than equal to 2 and greater than equal to 33. For example दे रहा हूँ बस. So, and you have to put and. या तो less than 2 वैल्यूज आएंगी, या तो greater than 33 वैल्यूज आएंगी. Yes or no? वो अगली रिपोर्ट में आ रहा है. So we're done with this report. Next report. So now listen carefully. This is the one that was given to you. So using fields from Dilthon and categories table, produce a report that does the following criteria. Obviously, first of all, we have to do is this step, right? So we'll come to create, we'll come to curate design. We will add all three tables, maximize it, and then we need is the first name, last name, nationality, gender. Sequence has to be the same. Year of birth, year of birth. Sequence has to be the same. बार बार कह रहा हूँ. Athlete age. अच्छा, तो वो अब हमें यहीं बनानी पड़ेगी. मैं इसको एंड पे नहीं जा सकता, ठीक है? Yeah, okay. Hold your horses, man. Okay. So what we do is, so if I want is the athlete age, मैं काम करता हूँ. Let me just, I want to show it to all of you. So by now ऐसे आपको आ जाना चाहिए ये. So we want is athlete underscore age has to be same case. This is the name of the field. Yes or no? This is the rule. Now this is a new field created. This is the name of the field. Yes or no? Yes, you have to put these two dots. This is how you create a new field. हर पेपर में आता है, ये तो ऑब्वियसली आपको रट्टा लगना चाहिए तक how to create a new field. Why? एक छोटी सी बात है, and there were some students confused how do you create. इसका बेटा आपने practice की नहीं. Yes. क्या? नहीं बेटा, वो आपके सही नहीं बनी होगी. It's not possible. Okay, then what does it do? Which calculate runtime to deduct year of birth from the current year. Okay, so the current year is 2021 minus is very good. Why is that so? Year of birth.
मैंने बताया था आपको whenever we have a field will always come in this. Will I put this in this? Will I put this in this? Why not? Very good, yaar. Very good. So I want you to be extremely confident. Concept. Obviously, यार 2021 is a number. It's a year. उसको मैं square brackets में क्यों डालूंगा? Rule है कि whenever we have a field, it has to be the square brackets. ये question था back? गलत है बेटा. मोनी वो आपने नहीं करना. Okay? उससे आपकी report एक तो save नहीं रहती. That's not the right way. Secondly, the examiner can ask you for a screenshot of the criteria. Filtering is not the way. I could have taught you that. Okay? Filtering आप spreadsheet में कर सकते हो, not in databases. तो वो रन टाइम के लिए ठीक होता है, रिपोर्ट बनाने में फिर आपको गलती आएंगी. Okay, right. So this is how we do it. Control C किया. Anyone has a problem with this now? Okay, so all we do is now we simply add this over here. It has to be the same sequence. Okay, इसके बाद हम गने add करना है run one. What's run one? That's run one. Then I have is T1, whatever it is. Then I have is bike. Then I have is T2. Nine. Then I have is where I was. Huh? Run two. Total time. Do I have to calculate total time? What else? Position. ठीक हो गया? Once yes. Wait करो. Wait करो. हो गया? ठीक है. So आप एक बार check कर लेना. How many fields do you have? So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yes or no? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So you're always supposed to do this. Get the point? One extra field might result in wasting your time to adjust. ठीक हो गया? ये step हो गया कि नहीं हो गया? Now can we come to this step? Nationality is JBL or Ireland. So where is it? Nationality. So nationality has to be G. ठीक हो गया? रन करो. डू आई गेट इट? यस आई डू. हमेशा रन करके देखो, हो सकता है काम ना करे. देन यू हैव टू चेक. जेंडर इज मेल, सो रन करके देखो. जी मेल आ रहा है. हर स्टेप पे रन करके देखो. Year is between this and this. It's between this and this, right? Okay. Inclusive. So year of birth, sorry. Year of birth. So I will write over here is greater than equal to this and less than equal to. Am I right? So it should be greater than and equal to. If you can you see from the back? मैंने क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है. Oh, नहीं मैंने ये नहीं लिखा. मैंने जो लिखा है वो कहाँ गया? नहीं वो क्यों गायब हुआ? Why? अच्छा, no problem. Greater than equal to and less than equal to. ठीक हो गया. वैसे रन करके पहले देख लें. ठीक है? Right? It's working. So और क्या करेंगे हम? मैं आपको दिखा रहा था कंट्रोल से. मैंने एक्चुअली कंट्रोल V कर दिया था. So greater than equal to this and less than equal to this. Yes or no? Fine. So run करके भी देख लिया हमने. What else? Okay, we've done this. Next, so we've done this. Make sure you've done. You can take with a pencil. We have done this as well. Yes or no? Okay. Shows the following fields. Yes. In this order. Yes. Fine. Be affirmative for everything. Source the data into sending order of nationality. So nationality has to be ascending and descending of position, and the position has to be is at the last. Descending, right? ठीक हो गया. Landscape. So once I run this, the first thing I have to do is I have to make a report. ठीक है? हम जाते हैं create पे, हम बनाते हैं इसको report. वो कहेगा इसको नाम सेव करो. Well, ठीक है. वो कहता है the text should be a title.
इस सी को आप कॉपी करो, कंट्रोल सी, एंड यूज इट एज द टाइटल। वहां भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इट हैज टू बी लैंडस्केप, सो हम सबसे पहले आएंगे आपके पेज लेआउट में एंड विल मेक श्योर इट इज लैंडस्केप एंड इट्स A4। वेरी गुड, ठीक हो गया। नाउ आई विल डू माई एडजस्टमेंट्स। सो आराम आराम से करूंगा, बहुत जल्दी जल्दी नहीं, बिकॉज आई माइट see what I did, so I have to make sure you हो। हम्म, पता है जी, वो मगर एट टाइम्स ना वो उसको, यू मीन लाइक दिस राइट? जल्दी हो जाता है, ट्रू। अच्छा ये हैव वी क्रॉस्ड और नॉट? नहीं, अभी टाइम लगेगा, कितना लगेगा टाइम? नहीं, ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा। क्या नहीं आ रहा ना? क्योंकि वो जो ये एडजस्टमेंट करता है ना, वो इसके मुताबिक कर रहा है ना, तो हमें इसको करना पड़ेगा। कुछ नहीं, टेक योर टाइम, इट्स ओके। इसमें विजिबल, एवरीथिंग शुड बी विजिबल। हो गया, आई थिंक सो। थोड़ा सा कर लें और, थोड़ा सा, राइट। सो फाइन, let me do see more, और क्या उसने कहा है, पहले कंप्लीट करने। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एथलीट्स एंड प्लेसेस एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट, द लेबल दिस शुड अपीयर एट द लेफ्ट। सो नंबर ऑफ एथलीट उसने बताया नहीं, काउंट करना है ना, है ना? तो हम इसको यूं कर देते हैं, यहाँ के कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। सो वी नीड इज व्हाट, द टोटल। हम करेंगे काउंट, यस और नो? सो आई वांट टू काउंट द रिकॉर्ड्स, इसके इधर आओ, ये आ रहा है ना काउंट, तो इससे पहले आई कैन पुट इज दिस, व्हाट इज दिस, कंट्रोल टोटल। सो कोशिश करो कि दिस शुड बी समहाउ बिट क्लोज टू इट, जरा अच्छा लगे, ठीक है। बोल्ड भी आप कर सकते हो, बिल्कुल किसने सही कहा था कि बोल्ड कर दें, अच्छा लगता है। सेम वे आई कैन इवन डू दिस इज के जो हमने नाम वगैरह लिख रहा है, ओहो, which is your name, center number, candidate number, this should be done using a label. So you do know this, here we go, that's a label। और yes, bold कर दो, बिल्कुल अच्छी बात है, visible अच्छा होगा। The more you facilitate the examiner, the better for you। So we done this, पेज नंबर इधर आ रहा है, इसको इधर करो, इधर आओ, reduce this to the maximum। हो गया मैक्सिमम पे, ठीक हो गया ना? क्या हो रहा है? जी जी, खुद ही रुक जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू पे आए, लेट मी जस्ट हैव अ लुक दिस वे। सो वी आर गेटिंग दिस, पेज 1 ऑफ 2 एंड 2, बिल्कुल ठीक है। फिर भी आप बिफोर यू प्रिंट आउट चेक कर लो, क्या चेक करोगे आप? यू विल चेक, is everything visible, field names are visible, data is visible, this is visible। I can actually थोड़ा स्कोर increase कर सकता हूँ मैं, डिजाइन है कि 41 प्रॉपर्ली विजिबल हो। एक एक चीज का ख्याल रखना है आपने, एक एक चीज का, ओके। देन यू कम बैक एंड यू चेक दिस एज वेल। जी उसको डिलीट कर दो, वो एक्चुअली, हाँ आप सही कह रहे हो, एक बाय डिफॉल्ट हो जाता है, यू नो बाय डिफॉल्ट मतलब व्हेन यू मेक अ रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट हो जाता है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो, अच्छा, मैं आपको मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, मैं वो तरीके से बताता, कैन टेल यू अनदर वे। ये देखो, मैंने अगर काउंट करना है ना, तो मैं ये भी यूज कर सकता हूँ। तो आई कैन एक्चुअली यूज ए टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर आई विल राइट इज इक्वल्स टू काउंट, काउंट ब्रैकेट स्टार, विच मीन्स काउंट एवरीथिंग, यस और नो। और इससे पहले मैं लिख दूंगा यही चीज, नंबर ऑफ। तो आप टेक्स्ट बॉक्स से भी कर सकते हो काउंट दिस, यस और नो। जी, अगर आपने किसी फील्ड के लिए से सम निकालना है, वैसे बता रहा हूँ, सिर्फ वैसे बता रहा हूँ, आप कहोगे इज इक्वल्स टू सम, सम इज बेसिकली फंक्शन। सो ये ब्रैकेट लगाए, या मेरे ब्रैकेट ना डिफरेंट से हैं,
सम किया, और सम किस फील्ड का, वी नीड टू कैलकुलेट सम ऑफ, लेट्स से athlete underscore age. This will calculate the sum of the athlete age. Yes or no? अब वैसे भी कर सकते हो, वैसे आपको ये पता भी होना चाहिए, अच्छी बात है। इज दैट क्लियर? सो टेक्स्ट बॉक्स और लेबल, सो टेक्स्ट बॉक्स के साथ यू गेट अ लेबल फॉर फ्री, डू यू नो दैट? लेबल सेपरेट होता है। इसको इधर कर देते हैं, अच्छा ज़्यादा स्पीच नहीं करते, बस ठीक है। रिव्यू करते हैं, और ये आ रहा है, ये आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। एंड वी गेट दिस परफेक्टली विजिबल। सो दिस इज लाइक योर फुल लाइक 30 out of 30 thing. So done with this, save your report and you printed. Okay, export fine 29. And I'll be giving you 30 marks on Friday. Printout वो Vas bhai will help you out. No, no, no. आपने नहीं करना।